देखिए ये हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है इसके अंदर ये प्रॉब्लम, ये काफी दिन से यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। अब ये इस कंडीशन में हो गया है कि अगर इसको हम ऐसे देखते हैं तो नीचे की जो आईसी होती है वो क्लीन नहीं दिखती है। मतलब अब ये चेंज करने की नौबत आ गई है इसके अंदर। कोई भी चीज इसके अंदर क्लियर नहीं दिखती है और ये बहुत गंदा माइक्रोस्कोप हो गया है। और अब इसको हम लोग जो है रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और रिपेयर करके देखते हैं कि ये यूज करने लायक होता है कि नहीं और रिपेयर कैसे होता है। इस चीज को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे।